Dear students, let me commence the discussion of the geometric distribution. Geometric distribution is quite a well-known distribution. Maybe you will say that it is not so much known as much as the binomial or the Poisson distribution. But actually, this is also a very interesting and well-known distribution. Let me present it to you. First and foremost, consider the Bernoulli experiment. अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्नूली एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? Well, my dear students, the Bernoulli experiment is that binomial experiment in which the number of trials is 1. आपको मैं याद दिला दूं कि binomial experiment क्या होता है. It is that one for which 4 conditions have to be fulfilled. The first condition, that for any trial, there are only 2 possible outcomes, success and failure. The second condition, that all the trials are independent of each other. The third condition, small p, the probability of success remains constant from trial to trial. And the fourth and last condition, that n, the number of trials, is fixed in advance, yani prior to the conduct of the experiment. तो उसमें आप जानते हैं कि जब वो सब कुछ होता है तो हम कहते हैं कि that is the binomial experiment, और उसके साथ जो probability mass function attach होता है, which is known as the binomial distribution, वो क्या है? P of x is equal to NCx, p raised to x, q raised to n minus x, where q is 1 minus p and x is equal to what? 0, 1, 2, so on up to n. अब जबकि आपको आपके जहन में आ गया कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो उसके बाद इस बात पे गौर करें कि मैंने कहा कि बर्नूली एक्सपेरिमेंट आप उसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर दैट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर n इज इक्वल टू 1. अब n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक ट्रायल, जस्ट 1 ट्रायल. सो अगर 1 ट्रायल होगी, then what will be the conditions by which we can say that it is a Bernoulli experiment? बल्कि आम तौर पे जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दुनिया में कि इट्स अ बर्नूली ट्रायल, यानी जब वो है ही एक तो उसको हम बर्नूली ट्रायल कह सकते हैं. वो जो 4 कंडीशंस थी उनमें से पहले वाली बिल्कुल उसी तरह कायम है. That when we do this trial, when we conduct this trial, there are only 2 possible outcomes, either success or failure. अब जो नंबर 2 और 3 हैं वो देखिए, नंबर 2 ये थी ना कि द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. तो जब वो एक ही है तो फिर इंडिपेंडेंट का तो कोई उसमें बात नहीं आती ना, जब तक एक और ना हो कि जिसके साथ हम देख सकें कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं. तीसरी बात, P, the probability of success remains constant from trial to trial. यहाँ पे of course there is only one trial. P की वैल्यू तो है, there is some probability of success. In fact, P is the only one lone parameter of the Bernoulli distribution, क्योंकि n जो है, जो आखिरी पॉइंट था कि n is fixed, यहाँ पे n is equal to 1. तो जब 1 नंबर आ गया तो उसको पैरामीटर नहीं कहते. पैरामीटर उसको कहते हैं जिसमें there is a possibility of it acquiring various values. जब आपने n को 1 कर दिया तो वो पैरामीटर ख़त्म हो गया. और अब बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन का जो probability mass function है, उसका जो PMF है, उस पे गौर करें. It is derived from the PMF of the binomial distribution. तो पहले मेरे पास जो था वो क्या था? NCx, p raised to x, q raised to n minus x. अब मेरे पास क्या आ जाएगा? 1cx
p raised to x, q raised to 1 minus x. और इसके साथ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि x की वैल्यूज जो पहले 0, 1, 2, 3 so on up to n जा रही थी, अब चूंकि n is equal to 1, इसलिए x की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x is equal to 0 और 1. तो अब ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, उसमें आप नोट करें कि 1c(x) जो है, either it will be 1c(0) if x is equal to 0, or it will be 1c(1) if x is equal to 1. दोनों सूरतों में this expression is equal to 1. आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए. So therefore we don't need to write it. So then what is the PMF of the Bernoulli distribution? It is P of x is equal to P raised to x into Q raised to 1 minus x. लेकिन अगर हम Q की जगह 1 minus P ही लिख दें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? P of x is equal to P raised to x into Q raised to, replacing it, 1 minus P raised to 1 minus x. उसके बाद एक कॉमा डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे x is equal to 0, 1. ये सारी बात जो मैंने आपसे कही, ये मैंने आपके सामने बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन रखी, लेकिन जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने लगी हूं, that is the geometric distribution. And in this distribution, we are dealing with Bernoulli trials. These kinds of trials in which in every trial there is either a success or a failure, and P is the probability of success in any trial. So given this, let us consider a random variable y that denotes the number of trials until we achieve the first success. Yani, misal ke taur pe, if I am tossing a coin, either I can get a head or a tail. If I regard head as success और मैं उसको टॉस करूं, फर्ज कीजिए कि पहली दफा हेड नहीं आ रहा, टेल आ गया, then I will toss it again. And suppose this time I am getting a head. तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? The number of trials until I get the first head in this case. So that is 2. और ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेकेंड टाइम भी आ जाए. ये भी हो सकता है कि आप 3 दफ़ा टॉस करें, पहली दोनों दफ़ा में हेड नहीं आया, थर्ड टाइम हेड occurs. So then x is equal to 3. और इसी तरह it can go on. हो सकता है कि 15 दफ़ा आप टॉस करें और 15 दफ़ा ही टेल आ जाए और 16वीं दफ़ा you get a head. So इस वाली चीज़ के लिए this whole scenario, for this we have the geometric distribution, the PMF of which is given by 1 minus P raised to x minus 1 multiplied by P. और इसके बाद एक कॉमा डालेंगे and then we will write x is equal to 1, 2, 3 and so on. So I repeat this for you. The PMF of the geometric distribution is given by P of x is equal to 1 minus P raised to x minus 1 into P, where x itself is equal to 1, 2, 3 and so on. अब इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही होगी, but please consider that same example again. कि हम एक फेयर कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं, then and head is being regarded as success, then obviously small p is equal to 0.5. और ये जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा, उसके तहत 1 minus p raised to x minus 1, यानी 1 minus 0.5 raised to x minus 1 multiplied by p, यानी multiplied by 0.5,
इस केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी and it will become 0.5 raised to x. x की values 1, 2, 3 and so on. तो इसको आप 1/2 raised to x भी कह सकते हैं. अब जरा देखिए, अगर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो फर्स्ट कॉलम x has values 1, 2, 3 and so on. और दूसरा जो कॉलम है, the column of the probabilities, according to this formula that we have just now developed, p of x की वैल्यू against x is equal to 1, इस एग्जाम्पल के अंदर it will be 1/2 raised to 1, यानी 1/2, यानी 0.5, and that is absolutely correct. कि अगर पहली ही दफा में हेड आ गया तो what is the probability of getting that in just that one task? It is 1/2. अब अगर आप एक और देखें कि अगर हम x की वैल्यू 2 कंसिडर करें तो according to this formula the probability is 1/2 raised to 2, यानी 1/4. So 1/4 is the probability के 2 ट्रायल्स करनी पड़ी. पहली ट्रायल में टेल आई और अगली ट्रायल में हेड आया. Probability of getting a tail in the first toss and a head in the second toss, and they are independent tosses, so that will be, according to the multiplication theorem of probability, the probability of getting a tail in the first toss multiplied by the probability of getting a head in the second toss. So that is 1/2 multiplied by 1/2, and that is equal to 1/4. तो इसी तरह आप इसको आगे चलते जाएं. This, my dear students, is the geometric distribution.